Okay, sorry for that brief break. Unfortunately, everything is finite, of course, including my phone memory. And unfortunately, I had to delete an earlier clip which I hadn't processed yet to ensure that I can capture all essential elements of this particular march, which still seems quite intriguing because as of yet, apart from the initial mild resistance shown by the police in the bazaar and also towards the end of the bazaar, beyond that, there doesn't seem to be much indication of the police making any attempt to prevent people from moving ahead. Public activity can be enjoyable to an extent. That sort of camaraderie and shukriya, mehrbani. Someone's just given me a bottle of water. Thank you very much. थोड़ा पड़े एग्री स्टेशन कितना दूर है? एग्री स्टेशन है ठीक ठाक है। हाथ नहीं जोड़ने तुम पीछे रखो। पीछे रखो बाहर रखो बाहर हो जो बाहर अच्छा मेरे ख्याल से बोलिंग पॉइंट ये है, आर्मी का चेक पोस्ट है ये। यहाँ पर तनवीर साहब कोई चुंगी है। अच्छा यहाँ पर उन्होंने इसको इस्तेमाल करना ये देख सकते हैं कि ये पब्लिक के लिए ये रोड बंद कर दी गई है। ये जो मुजाहिरीन आ रहे हैं ये हजारों के हिसाब में इनको पुलिस यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रही है। तो इंतजामिया में ये कौन है? ये जो नीले कपड़ों वाला है, ये नीले कपड़ों वालों को तो मैं जानता, अलबत्ता SHO सरदार इफ्तिखार और दीगर उनकी नफरी है। SHO तो अपनी वर्दी में है। हाँ तो okay, the volume is also increasing of the crowd, as you can tell, because they've also sensed that this is the bowling point. ये यहाँ पर हम bowling. Bowling point that we were thinking of, and I was obviously wondering whether are the police taking this very lightly or they thought that this is beyond them, but no, this is a chungi, a toll post if you like, where public transport gives its bit, 10 or 20 rupees, part of the local taxation system, but people do want to move forward. Right, and some people have actually come through because the extent of people, the amount of people in this procession is such where it'll be very difficult for the police to control them if the protesters, if indeed the crowd has that intent of proceeding ahead towards the grid station. What you'll also find a couple of 100 meters or so ahead is one of the many Pakistani army camps, or whatever you want to call them. Okay, it seems that the people are slowly edging ahead. Okay, good. From the point of view of public activism, yes. Okay, there seems to be a range of cars behind as well. Look, some people have already proceeded ahead. Okay, and that noise is incessant. It's a bit like a football crowd. Okay, so the very easily negotiated
that checkpost, and they've come ahead, and the police are again showing little resistance, maybe perhaps because out of numbers. Okay, the temperature is also rising. The temperature is rising in the environment, as well as the temperature amongst the crowd and the police. Now, as you can see, the police there with their machine guns there. Well, certainly at least one machine gun there in evidence, a few other Kalashnikovs as well. So, the question is, will the police resort to firing? Certainly, it seems as if they're intent to fire in the air. It seems that they seem intent to fire in the air. Right, okay. Okay, it seems these police guys have been instructed to fire in the air. Okay, the police are debating amongst themselves whether the crowd will relent or not. And it seems that within the crowd there are obviously people who are on the side of the authorities, as well as people who indeed have the intent of moving forward. A lot of shouting and cheering going on at the moment. Okay, a lot of these people are not as fortunate as myself to be having some water while this is happening. Okay, this scene is not entirely unfamiliar. ये भी एक सवाली निशान है बिल्कुल जी हाँ और ये सवाल पूछने का शायद इस वक्त नहीं क्योंकि लगता है कि दर्जा हरारत धूप की वजह से भी और इंतजामिया और आवाम की तरफ से भी. As you can see, the crowd have not yet given up. They may have come to a point where the police have shown some sort of an edge. As you can see, the police are in two tranches here. The forward block with sticks, as you can see, or batons, and you have those behind who are ready and with the intent of certainly firing in the air. And who knows if things there's just a member of the PMLN in Khuiratta also vying on the side of relenting and giving up. Let's see how long this tussle goes on. It has obviously been going on for the past few minutes. Okay, there's some sort of discussion here. Right, okay, this is a familiar tactic, getting everybody to sit down to cool down somewhat. Okay, the people here are right in the glare of the sun. Okay, they're also trying to mop up all those people who've managed to move ahead to forward positions. And I'm thinking I'm just going to be moving slightly back to get a better view, a better aerial view, if you like, of what's happening. And I'm going to try and zoom in. Okay. It seems as if much of that public that joined this procession throughout the city has retreated probably way back. Probably doesn't want to take the risk of an injury or preventive detention or worse.
पुराने तरीके से जांच करना है और शामिल से आपकी जांच को मिलवाया जाएगा। Okay, the Paya Jam, or what you might describe as jamming the wheels. क्या लाना? जनाब यार खैरियत? खैरियत और ठीक है राज साहब? आप सुनाएं? कैसे हैं? ये जिस जगह पे आवाम खड़ी है काफी धूप है इस जगह पे। बहुत धूप है ना, थोड़े से ये पीछे हो जाए ना तो साया है थोड़ा सा। हाँ। ये साया और साइड दिलो साइड। अच्छा एक सेकंड इधर कर जाए ना किला है तो नजर आशना। हाँ ये इधर मेरे पास आप ऐसे नहीं नजर आएगा क्योंकि मैंने अपने जो ख्याल है वो सामने वाली पहाड़ी है इधर देखो। दरख्त नहीं है दरख्त ये सामने जी बाईं तरफ जो है वो किला है। बिल्कुल ठीक है। ये बल्ब के सामने पहाड़ है। Right, you may just be able to catch a glimpse of Karjai Castle or fort. Maybe not. You may just have to wait till I actually go there to the actual place and make a recording of that, just like I've done with other famous or historic buildings. Meanwhile, back to this point of deadlock. Okay, negotiations are ongoing between those members of the crowd who are slightly slanted, if you like, towards the administration and the concerns that the administration has. But whether or not this deadlock will mean people retreating back towards the city or not, we're still not certain. I'm going to take a pause for a bit because I'm trying to conserve whatever I can in terms of memory that's left. I do apologize, but I'll keep the video on pause, so the recording on pause I should say, just in case anything erupts. Okay, welcome back. Well, they have edged forward just a little bit. I mean, look, some of these guys have come forward. But still we're in a sense of suspense. Like there is some movement ahead. People are edging forward somewhat. अच्छा तैफूर साहब लगता है कुछ थोड़ा सा फॉरवर्ड मूवमेंट हुआ है यहाँ पर एक रवायती अंदाज में चीज़ों के काफ़ी कुछ लोग कह रहे हैं वो आगे जाए। अब यकीनी तौर पर बात यह है कि चंद लोग ऐसे हैं इस जुलूस में जो कुछ थोड़ा बहुत नरम गोशा रखते हैं इंतज़ामिया की तरफ, या हम ये कह सकते हैं कि इंतज़ामिया की कदर करते हैं, उनकी जो मजबूरियां हैं उनको सामने रखते हैं। हालांकि जो हमारे मामलात हैं, जितने जुलूस जितने एहतजाज आज़ाद कश्मीर में होते हैं शायद दुनिया में किसी और जगह में नहीं होते, ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे जो मामलात हैं वो यूं के तू हैं। वो तो है असल में इंतज़ामिया के हवाले से जो पब्लिक का नर्म गोशा है वो इसलिए कि ये इंतज़ामिया के अंदर जो लोग हैं वो भी हम में से ही हैं, वो भी हमारी पब्लिक है। लेकिन अफसोस ये कि देखिए ना वो असल में देखे ना जो जज्बात होते हैं अवाम के, उसको ठंडा करने के लिए जो रियासत के ही लोग हैं वही काबिज कुव्वतों के लिए सबसे मुफीद होते हैं कि भाई इन्हीं के ज़रिए से उनको कंट्रोल करें, क्योंकि पब्लिक भी इनका लिहाज करेगी और ये भी पब्लिक का लिहाज करेंगे, ठीक है। अब होती यहाँ पे पाकिस्तान की फ़ौज, फिर तो मैं समझता हूँ कि देखिए ना इन्हें पाकिस्तान की फ़ौज को बैरक्स में रखा हुआ है। हम सुबह भी यही सस्पेंस में थे, तजस्सुस में थे कि ये बेचारे फ़ौजी
यहाँ पे क्या करते रहते होंगे? बैठे रहते हैं और क्या करते हैं, मोबाइल पे गेम खेलते रहते हैं सही। और क्या करते हैं। या तो वो फौजें होती हैं जो खेतों में काम करें, खलिहानों में काम करें और मुल्क को बनाएं। हमारी फौजें हमें ही डरा रही हैं। मैं बचपन से लेकर इस वक्त तक अपने ही तोपें वगैरह देख रहा हूँ, इधर जाती हैं उधर जाती हैं। इन्हीं फौजियों की ये सिर्फ यहाँ के वसाइल को लूटने के लिए, यहाँ के मादनियात को और यहाँ सही है। के को बेवकूफ़ बनाने के लिए। यहाँ पे एक ऐसी जगह है जहाँ से कोयला निकल रहा है, वो जगह आपको पता है? मार्बल निकलता है यहाँ से बेशुमार मादनियात। या आप करजाई चले जाए, एक किस्म का किस जगह पे? करजाई में बेशुमार कलर के आपको स्टोन नजर आएंगे। वहाँ पे कोई वहाँ पे कोई आर्मी बैरक्स भी है? नहीं। अच्छा, शुक्र है अभी तक उन्होंने उस पर कब्जा नहीं किया। थरोची एंटी और पता नहीं कहाँ उन्होंने सब हमारी जो तारीखी जगह हैं, मकामात हैं, उनके ऊपर तो कब्जा किया उन्होंने। Okay, so the discussions are. इस चीज़ पर है कब्जा इनका। यहाँ पे जो मेरे ख्याल में चोट कनाल जो रकबा कॉलेज के बाहर जो ग्राउंड है ना, उसके ऊपर उनका कब्जा है। तो मैं पिछले दिनों में यहाँ पे एक मीटिंग थी स्टूडेंट्स की, तो हमने वहाँ पे ये डिस्कस किया था कि वो आवाम के लिए वहाँ पर पार्क बनाया जाए, जहाँ पे ये पंजाब से वो आते हैं और वहाँ पर रक्स होते हैं बेहुदा किस्म के, और जो यहाँ पर सकाफती मेला लगता है, उस मेले की आड़ में यहाँ पे जो एक खौफनाक किस्म का नौजवानों के जज्बात के साथ गवर्नमेंट की तरफ से मिलकर जो खिलवाड़ किया जाता है, इसलिए वहाँ पर पार्क बनाया जाए। वो इनके पास रकबा है, हालांकि उनकी उस जगह की ज़रूरत नहीं है आर्मी को। सही। जहाँ पे हम भी पिछले अरसे में वहाँ पे एक प्रोग्राम करना चाहते थे और हमें रोका गया था। सही जी, बिल्कुल। ये किस महीने में हुआ था? ये मेरे ख्याल में अगस्त सितंबर में। सही। Okay, in the meantime, it seems as if the people have not given up. People still want to proceed towards the grid station. But again, I'm going to take another pause here to conserve memory. खुफिया वाले मैं देखो ना पहचाना मुश्किल होगा, लेकिन मैं अब अंदाज़ा कर सकता हूँ क्योंकि 7 साल हो गए अब। ठीक है, कैप वाले मैन की तरफ आप कैमरा लेके। अच्छा, ये जो है ठीक। Right, so it's a question of spot to the ISI. What are you saying, ठीक ठाक? अच्छा, ये क्या बात है कि ये जो एजेंसीज वाले हैं हमेशा जो सहाफ़ी हज़रात होते हैं टारगेट उन्हीं को करते हैं। वो भाग गए भाई, सब नहीं, वो इधर पीछे गए हैं, वो उधर खड़े हैं। Okay, so I'm just taking another pause here. Like I say repeatedly, that I've got to conserve whatever is left of the memory. Okay, some sort of an announcement going on, so. Okay, a prolonged series of discussions going on. And it would, of course, be interesting again to spot the ISI. बंद हुई है, महिंदा कभी नहीं आएंगे। अगर ऐसे हो महिंदा कभी नहीं आएंगे। ये सुनना Okay, so this crowd is quite bold. I must confess, they're not relenting. Okay, the question is if the Pakistani president can have 24-hour uninterrupted electricity in his president house and anywhere else where he cares to reside. Then the question is, why can't the shopkeepers, why can't the retailers here in Khuiratta or in any other part of Azad Kashmir have access to electricity? Okay, so there are people within the crowd trying to calm him down.
भाईजान थोड़ा सा अपना मौका पेश करें। ये हमारी बिजली बंद है, 22 घंटे हमारी बिजली बंद रह रही है। पानी हमारा है, पानी हमारा है, हमारी 22 घंटे हमारी बिजली बंद हो रही है। ये क्या मजाक है? ये क्या कर रही है पाकिस्तानी? देखिए भाई साहब ये एक मिनट भाई साहब एक सेकंड, ये मसला सालों साल से है। पाकिस्तान अपनी बिजली की जरूरियात पूरी नहीं कर सकता, ठीक है? तो हम कीमत बिजली नहीं दी जा रही। पाकिस्तान हमें रॉयल्टी दे मंगला डैम की और हमें बिजली दी जाए। 300 मेगावाट पाकिस्तान आजाद कश्मीर की बिजली की नहीं, ये लोग अगर अभी 50 मेगावाट बिजली लेके हमें बिजली नहीं दी जा रही है। 24 घंटे में से 20-22 घंटे बिजली बंद रहती है। हमारा क्या कसूर है? हमने अपनी बिजली पाकिस्तान वालों को दी है, यही हमारा कसूर है। हमने अपने आबा अजदाद की कब्रों पे मंगला डैम बनवाया, यही हमारा कसूर है। तो ये जो इंतजामिया है, ये जो इंतजामिया है, क्या कोई ऐसी बात है क्या ये इंतजामिया कोई ऐसी तसल्ली बख्श बात आपको बता सकती है? अभी तक कुछ भी नहीं हमें बताया गया, सिर्फ इंतजार करने के लिए कहा गया है। 15 से 20 मिनट हम इंतजार करेंगे एक्शन साहब का, ठीक है? अगर वो आए, हमारे मुज़ाकरात कामयाब हुए तो हम लेकिन एक और चीज है कि एक्शन साहब के पास भी इख्तियारात नहीं है बिजली के मामले में। कोई भी बाबता का आजाद कश्मीर का वज़ीर आज़म के पास इख्तियारात नहीं है बिजली के मामले में, लेकिन हम उनके पास रिकॉर्ड एहतजाज जरूर रिकॉर्ड कराएंगे, ठीक है? उसके बाद अगर हमारे मुज़ाकरात कामयाब हुए, उन्होंने हमें तसल्ली बख्शा तो हम अपना पुरअमन एहतजाज खत्म कर देंगे, वरना ये ग्रिड स्टेशन तक एहतजाज जारी रहेगा। वैसे हमें नजर यही आ रहा है कि 5 जून को बहुत सारे लोग आजाद कश्मीर से जाएंगे मंगला की तरफ, यकीनन, क्योंकि मसला सिर्फ नहीं है सबका। यही सूरत-ए-हाल की कोशिश में हम इंशाअल्लाह मंगला डैम तक जाएंगे और लॉन्ग मार्च करेंगे। So what we see is an army truck here in front of us. So I just spoke to that guy who is a member of the ISI, and he was very, let's say, he was very careful in ensuring that no filming was made of him, even though, as I tried to tell him in between, that this is an age of transparency. So sooner or later, one has to come within that fold, and the work of that sort of institution is